with a person who is very inspiring, very motivating, because this person has achieved something that so many students in our country want to achieve. Yes, ladies and gentlemen, we're going to talk today with Mr. Nav Goyal, and trust me, the interaction is going to help you all. I hope that you're all going to ask some great questions in the chat box, and perhaps please pay attention to the answers as well that we're going to receive here today, because these discussions that you hear out are very important, very essential, very vital for all of you. I'd like to first of all wish you all happy health. I hope that you're going to stay happy, and hope that your health is going to be positive throughout this journey that we're going to have with the ongoing pandemic. I hope that you're all safe, sound, and healthy back at home as well. Trust me when I say that the discussion today is going to be interesting. I mean it, because this is somebody who is officially working with the government of India as the IRAS. He is the Senior Assistant Financial Advisor at Indian Railways, and I am hoping that you're all going to enjoy this. Let's see if you all are going to enjoy this as session as I am expecting you all to. How many of you actually out here want to crack UPSC services? Can anybody write it down in the chat section? I mean, if you're interested in cracking the civil service examination or are preparing for UPSC examination, please write it down in the chat box. You can write down yes, no. I mean, there are, I think, multiple aspirants, not just in our campus, but perhaps in so many other campuses as well across the country. Everybody wants to crack UPSC, and everybody wants to try out to do certain government job. And I think that we all somewhere down the line belong to middle class family, and we all want to do something better, not just for ourselves but for the society as well. And I think that this is going to be a wonderful discussion for all of you, because the person whom we are going to interact with has an all India rank of 627. That means that he's somebody who knows everything about how to crack the examination, or maybe you can learn from his tips as well, because everybody has a little different style of preparing for their examination. So let's see how it is going to be, but I'm super sure you're all going to love this particular issue. We're going to interact with Mr. Nav Goyal, who is the Senior Assistant Financial Advisor at Indian Railways. I'd like to read out the profile for all of you, ladies and gentlemen. Mr. Nav Goyal is an Indian government official working as IRAS Allied Service Senior Assistant Financial Advisor at Indian Railways. He is experienced finance professional with a demonstrated history of working in the railroad and power industry, skilled in power plants, and I think he has graduated from Harcourt Butler Technological University in the year 2011 in the electrical engineering department. Then he worked as an assistant manager in NTPC for 4 years. In the meantime, he started dreaming of serving nation and started preparing for UPSC CSC, and he got succeeded that in the year 2014 with an all India rank of 627, and completed his training by the year 2017. And then he got recruited into Indian Railways as Assistant Divisional Finance Manager. With the great knowledge, he then got promoted as Divisional Finance Manager, and in the very less time span, he has become a Senior Assistant Financial Advisor at Indian Railways, and he's still in office, ladies and gentlemen. I am going to present to you all Mr. Nav Goyal, and I'd like to request, sir, if he's watching me live right now, to kindly send a request so that I can add him up for this particular chat session that we're going to have with all the students. A lot of students are writing positive things. Thank you so much, ladies and gentlemen. Let me tell you that this session is brought to us by the student organization Ignite LPU. I hope that you're all going to give acknowledgement to them as well for conducting and for bringing such eminent personality to our Instagram page, to our online mode. I'd like to request the Nav Goyal sir to kindly send me the request so that I can start with the process. We're just waiting, ladies and gentlemen. I think that we're going to start
in the next one. We'll be adding him in the next 1 minute. I can see you all are very excited to interact, and I think perhaps we have Mr. Nav Goyal sir here with us. Hello, sir. Welcome to lovely Professional University, and welcome to our session out here, wherein we're going to have a certain conversation that is going to help all the students out here. Okay, hi Vishnu. Thank you very much. Firstly, I would like to express my thanks to LPU and to Ignite for giving me this opportunity to. The thing is, everyone has their own experiences. Can you hear me? Yes, sir, I can hear you out. I'd like to request the students as well to kindly confirm if they are able to hear sir out. You can write it down in the chat section. You can write down a yes if you're hearing us loud and clear. You can write down a no if you're not hearing us. Any which way, sir, I think I am able to hear you. It perhaps means that the students are also able to hear you, because I can see everybody writing on yes in the chat section. All right, sir. So I think the students have been super excited because A, you're somebody who is already doing their dream job, and B, you're also somebody who is from a middle class background, so they can relate with you as well and your story and your success story as well. But before that, I think I should talk about the challenges that you've faced. You know, I think it is not that easy to be at the place and say that everything is going to be easy. I'm sure that there are certain challenges that you must have went through. So I'm going to discuss the challenges first, and I'm going to ask you, what was the biggest challenge when you started preparing for the UPSC civil services examination? So the thing is, the unique thing with me was I was working and I was preparing because I did not have a concrete plan before preparing that whether I'll be taking a full-fledged leave or I'll be resigning from the company. So being from a middle class background, I was not able to do that because uh, circumstances were like that. So I could not resign from it particularly. And I was also very sure that I need not to resign from this job because the thing is, I have also realized in the preparation that once you are in job and you are preparing, then there is some mental peace that there is some backup. I have seen many guys who are coming from the IITs and NITs and like who were very well placed and they resigned from their job. And after that, they're not able to qualify UPSC because UPSC is a thing which is very unpredictable and success is not assured here as such. So the thing is, you have to take a risk after which it is succeeding also because the exam is like that. It is highly competitive and nobody can guarantee your success. So it is pattern is like better to not put all your cards in one basket. Better to keep it distributed. So that was so I was preparing while I was in work. So the biggest challenge for me was I was working in a shift job. So for 2 days I was having a morning shift. For 2 days I was having an evening shift, and for 2 days I was having a night shift. And then we were having 2 days off, like Saturday and Sunday. So it was not Saturday and Sunday; it could be any day of the week. So for me, biggest challenge was to how to manage my time because कभी तो आपको रात को पढ़ना है, कभी मॉर्निंग में पढ़ना है, कभी इवनिंग में पढ़ना है. तो नाइट मतलब आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, आपका खाने का पैटर्न डिस्टर्ब है, आप कब खा रहे हो, सुबह आपको जल्दी खाना है, कब किसी दिन आपको देर से खाना है. Everything was disturbed. So what I used to do is to tackle this challenge. मैंने क्या किया कि जब भी मेरे को टाइम मिलता था, irrespective whether I am on job or irrespective whether I am at home, so जब भी टाइम मिलता है उस टाइम में पढ़ना है. मतलब शेड्यूल बहुत ज्यादा उस टाइम मैटर नहीं कर रहा था. The time was of essence. So I was thinking and I was working like मेरे पास जितना टाइम है इसको पूरा यूटिलाइज कर लो. That's all. So that was my working style that time. All right, sir. There are so many questions that I've received from students when I told them that I'm going to interact with you, and most of these questions are, related to civil services examination itself. And the first question that perhaps the students are asking is, what are the tips and tricks of reading? How to memorize things? This is actually a very difficult question because the syllabus is so vast, so you cannot memorize everything. तो आपको memorize करना है चीजों को. सबसे पहली चीज important है, though it is a very cliched thing, you can hear it from everyone who has appeared for civil service and qualified, that you have to stick to syllabus. But still, I find many don't know about the syllabus. Like when I am sharing my Instagram post, so many people are confused between they are firstly not aware about the syllabus itself. So that may be because they are just in the starting stage, so that is not their fault. So
फर्स्टली वी हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट द सिलेबस, हमारे सिलेबस में क्या है, Mm-hmm. क्योंकि अगर आप फुल फ्लेजेड प्रिपेयर कर रहे हो दिल्ली में रह के, तो एक एरिया है वहाँ पे ORN करके, ओल्ड राजेंद्र नगर, एंड एक है मुखर्जी नगर, OR. ORN, Old Rajendra. Okay. Yeah. And even Okay. nowadays, if you are not going to Delhi, there are so many websites. तो आपको वहाँ पे Mm-hmm. इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, मतलब आपको हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ किसी ने ज्ञान दिया हुआ होगा अपना, तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा ज्ञान मेरे को वहां से उठाना है। तो ये एक Right. बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये लगता है कि टिप्स में मैं यही देना चाहूंगा कि आप सिलेबस को स्टिक करो, अपनी बुक्स को एकदम शॉर्टलिस्ट करके रखो पहले से कि हमें ये पढ़नी है। देयर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज ऑफ टॉपर्स, देयर आर सो मेनी वीडियोज ऑफ टॉपर्स, एंड यू कैन गेट इजीली कि इन्होंने क्या पढ़ा, क्या बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अपनी एक लिस्ट चॉक डाउन करके रख लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद फिर उन्हीं को Okay. स्टिक करना है। हो सकता है कोई आपके साथ वाला जो हो, वो बोले कि अरे ये क्यों पढ़ रहे हो बुक, इसमें तो इससे पढ़ के नहीं हो सकता तुम्हारा। तो हम बहुत जल्दी Yeah. इन्फ्लुएंस होने की टेंडेंसी होती है हमारी, तो वो नहीं होना पहली चीज। तो हमारे रिसोर्सेज को हमें लिमिटेड रखना है, और टाइम का यूटिलाइजेशन हमें ऐसे वो हमें खुद स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि हमें कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, और हमें कितना टाइम किस चीज पे देना है। हो सकता है मेरे को हिस्ट्री समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती हो, आपको हो सकता है Mm. कॉन्स्टिट्यूशन समझने में प्रॉब्लम होती हो, तो जो मेरे हिस्ट्री के स्टैंडर्ड थे वो आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक योर ओन स्टैंडर्ड्स कि मेरे को कितना टाइम किस चीज में डिवोट करना है, क्योंकि सबका अपना अपना बिल्कुल एप्टीट्यूड है एक। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. I am sure the students are listening to the conversation. These are very important and vital tips. I am sure you're going to like it because even if you're not preparing for UPSC Civil Services examination, you can apply this for your normal academic career as well. And I hope that you're going to like it. So the second question that I have is students are asking that do we really need to study 16 to 18 hours a day to crack the Civil Services examination? No, no one can sustain this for the time period and time you need for civil services. Like it usually takes 1 year to 2 year minimum to prepare for civil services. तो अगर आप रोज 16 से 18 घंटे पढ़ रहे हो, then you will be burnt out very soon. तो बेसिकली द Yeah. पॉइंट है, आपको स्ट्रेटेजाइज करना है टाइम को अपने, कि मतलब सपोज जैसे मैं था, तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं हार्डली 4 आवर्स पढ़ पाता था व्हेन आई वाज on a working day, I was able to Yeah. study for 4 hours. Then on a weekend, I was able to study for 10 to 12 hours. इससे ज्यादा नहीं हो पाता, Yeah. मतलब पॉसिबल नहीं होता। बट हाँ, जब ये हो गया, प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद मेंस के लिए व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, बिकॉज माय ऑप्शनल वाज फिलोसफी एंड आई वाज नॉट एट ऑल अवेयर Yeah. अबाउट फिलोसफी, I took a coaching in Delhi, and after that I prepared for my optional. So at that particular point of time, which is a period of roughly 3 months to 3.5 months, so I think 16 or 18 hours तो इतना हो आराम से हो जाता होगा। मतलब basically Yeah. you can include the time of taking taking in the food and Yeah. sleeping. उसके अलावा जितना भी टाइम Mm. बचता था स्टडिंग ओनली, बिकॉज मेरे पास उस टाइम टाइम बहुत कम था, तो मेरे को उस टाइम अपना जितना भी टाइम था उसको मैक्सिमाइज करना था, उसकी प्रोडक्टिविटी फुल लेके आनी थी मेरे को, तो मैं पूरे टाइम पढ़ता ही था। All तो उस टाइम 16 आवर्स होता होगा, लेकिन और पूरे साल भर आप 16 आवर्स नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता। Bilkul. I like to tell all the students that the person who is interacting with us here today is Mr. Nav Goyal. And let me tell you that he is the senior assistant. My phone just fell down. Sorry. नो प्रॉब्लम। So he's a senior assistant financial advisor at Indian Railways. He's somebody who has cleared the civil services examination with a rank of 627. And he's giving us, amazing tips and tricks to succeed in life and perhaps in all the endeavors that we carry out. So the second question that I have for you is, a lot of students are asking when to start preparing for this particular examination. You're somebody who worked for almost 3-4 years in a company and then you started preparing for this. But the students are asking as to when should someone start preparing for civil services examination. So I think the best time to start is as early as possible. One, सपोज आज मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि मेरे को सिविल सर्विस, मेरा ड्रीम है आज की सिविल सर्विस में जाना है, तो मेरे को अपने 2-3 दिन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, एक हफ्ते तक स्ट्रैटेजी बना लो, उसके बाद से इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए। सो देयर इज नो आइडियल टाइम एज सच। इफ यू आर इन ग्रेजुएशन, इफ यू आर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सेकंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट, बिकॉज अभी आप फुल नहीं कर पाओगे उसको। आप हो सकता है 3 आवर्स दे पाओ, 4 आवर्स दे पाओ, लेकिन एक अगर टेम्पो आपका बन जाता है एंड यू आर एबल टू go into the character required for UPSC, then Yeah. it will help you once you graduate. After that, you can immediately sit for exam and you can definitely clear it. And there have been so many ample number of examples who have already cleared it at the age of 21 or 22 just after graduation.
सर आई हैव अ क्वेश्चन. व्हेन यू वर ऑफ द ट्रैक फॉर 4 years, जब आप कंपनी में आ जाते हो तो योर मूड काइंड ऑफ चेंजेस. You do not become, you're not that student who is around books. You're somebody Yeah. else. But from there, when you switched to preparing for UPSC civil service Mm. examination, the Yes. the kind of character must be different, Mm. because you are working for one shift and then on the other shift you're studying. So the mind Mm. process must be completely different. How did you channelize your energy and how did you manage the time for both the things? बिल्कुल आपने सही बोला. Even like I joined a working post in 2012, I think 2012 Yeah, April, and immediately after that, like 1 or 2 months afterwards, I started preparing. तो जब yeah, आप पहली बार हिस्ट्री की बुक उठाते हो, ज्योग्राफी की बुक उठाते हो, सिविक्स की बुक उठाते हो, एंड दैट टू yeah, आफ्टर अ गैप ऑफ आई वाज लाइक रीडिंग टिल 10th आई हैव रेड द yeah. हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. तो आप जब 10 साल के गैप के बाद उठाते हो चीजें, या 10 साल का तो नहीं, 6 से 8 साल का गैप हो गया, उसके बाद जब आप उठाते हो Mm-hmm. तो लगता है क्या पढ़ रहे हैं ये, मतलब तो होता है कि क्या होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि एक जनरल टेंडेंसी, एक जनरल परसेप्शन है कि जो आर्ट्स वाले लोग होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन आर्ट्स में करी है, तो दे आर मोर लाइक उनको राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी होती है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग वालों का क्या होता है, हम लोग फॉर्मूलाज पे, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, एंड बिल्कुल. हमारी कुछ जो थ्योरीज होती Shortcut. है, फ्लेमिंग्स राइट एंड रूल ऑफ मैग्नेटिक थ्योरी, तो ये सारी थ्योरीज हैं, मतलब इसमें कुछ लिटरेचर नहीं लिखनी आपको अपनी, आपको बताना है करंट यहाँ से बिल्कुल. आया, यहाँ से गया, और आपका सर्किट कंप्लीट हो गया. बट तो प्रैक्टिस नहीं होती, तो लोगों को बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होता है कि हम लोग लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे. तो मेरे साथ भी हुआ था, ये Hmm. सबके साथ हुआ. तो मेरे को लगता है कि इसमें हमें यही करना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए चीजों को. वंस यू आर इनटू दैट, देन यू कैन स्टार्ट इन अ फुल फ्लेज्ड मैनर, एंड वो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता. बस थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट लीजिएगा, क्योंकि अगर जॉब में हो तो आपकी सैलरी आ रही है, आप आराम से अपना Hmm. पार्टी कर, फ्रेंड्स के साथ सब चीजें कर रहे हो, तो आपको लगता है कि क्यों बिल्कुल. पढ़ना है, क्यों प्रिपरेशन करनी है. तो उसके लिए एक बहुत इनर मोटिवेशन, इनर जो ड्राइव होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज देयर विल बी सो मेनी अराउंड यू हु विल ट्राई टू पुल बैक, अरे भाई क्यों जा रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, यहाँ पे मजे करेंगे. बिल्कुल. तो वो So, चीज. sir, when you were preparing for this examination, there must have been certain time when you felt like, okay, let's just give it up. I think I'm already earning good in this company. Why should I invest so much energy to crack a certain examination? जिसका पता भी नहीं है कि if I'll be able to do it or not. What was that one thing that kept pushing you towards your goal? Because I was not dissatisfied with my job. I was very satisfied there. So I was looking for Yeah, a better thing. I was not looking for an alternate thing. तो मेरे पास ये yeah. डिससेटिस्फेक्शन नहीं था कि मैं यहाँ पे क्यों काम कर रहा हूँ, यहाँ से भागना है. Mm-hmm. मेरे पास ये था कि Mm-hmm. हाँ हमें इससे बेटर चाहिए, तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था. तो मैंने सोचा कि यार इतना टाइम जब हमारे पास है यहाँ पे, व्हेन आई वाज वर्किंग इन शिफ्ट आई वाज हैविंग लॉट ऑफ टाइम, फ्री Yeah, टाइम विद. तो मैंने सोचा कि जब सोच ली करने का, तो करते हैं इसको. और मोटिवेशन ये था कि भाई अगर यहीं रह गए तो फिर यहीं रह जाओगे, 20 साल तक फिर वही करना mm-hmm. है हमें, तो हम देख रहे हैं कि हमारे सीनियर्स कर रहे हैं, तो अगर आपको वो नहीं Yeah, करना तो इट इज अ कॉन्शियस चॉइस. अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में सफर करने वाले हो, क्योंकि वो चीज आप बिल्कुल. चाहते नहीं हो. सफर इन द सेंस कि मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे सीनियर सफर कर रहे थे, बट मैं वो नहीं चाहता Mm-hmm. पर्सनली. तो अगर मैं कोई चीज अपने के लिए पर्सनली नहीं चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को एफर्ट आज ही करना पड़ेगा. तो हाँ, आपका पार्टीज आपकी मिस होंगी, थोड़ी सी आप दोस्तों से कम बातचीत कर पाओगे, दैट विल बी ऑल द थिंग्स व्हिच यू आर लूजिंग, बट आफ्टर दैट यू कैन एंजॉय एवरीथिंग. सो वो Yeah, जो मिसिंग वाला पीरियड होता है वो हार्डली 2 साल का, 3 साल का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा. इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, लाइक while remaining in Delhi, I removed all the social media things. Instagram was not there okay, that time. Facebook and WhatsApp was there. तो okay. फेसबुक और व्हाट्सएप भी मैंने हटा दिया था, बिकॉज दैट वाज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी. सम पीपल लाइक Yeah. फाइंड व्हाट्सएप एसेंशियल टुडे, इट मे बी, बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट एसेंशियल फॉर मी, सो आई रिमूव दैट आल्सो. All right. Great, sir. Sir, a lot of students are asking as to what is the best way to prepare for UPSC examination, which subjects to start from and what to end next. तो देखो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा इनर्शिया होता है, तो हमें हमेशा किसी चीज को अगर हमें मूवमेंट में लाना है तो हमें ऐसी चीज उठानी चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है. तो आई Hmm. स्टार्ट विद अ बुक आई रिमेम्बर, बिपिन चंद्रा. इट इज हिस्ट्री बुक व्हिच इज लाइक Hmm. रेड बाय एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन. तो मैंने उससे Yeah. उठाया. वो द फॉर्मेट ऑफ द बुक इज स्टोरी फॉर्मेट. तो व्हेन यू Yeah. आर रीडिंग इट, देन यू विल नॉट फील दैट आई एम स्टडीइंग फॉर यूपीएससी.
तो Okay. अगर आप कोई ऐसा चीज उठा रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, वो आपका हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट आता है, तो वो तो नहीं हो सकता। ज्योग्राफी में भी बहुत Mm-hmm. कम लोगों को इंटरेस्ट आता है, तो आई थिंक हिस्ट्री ऐसी चीज है जो सब लोगों को इंटरेस्ट आ सकता है, जिसमें हिस्ट्री हो गई या इकोनॉमिक्स हो गई, कुछ लोग इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसी चीज उठाइए आप जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, सो दैट यू कैन मेक अ मोमेंटम एंड देन कंटिन्यू ऑन इट। Hmm. All right, sir. That's a wonderful tip for the students. Also, students are asking, sir, that is it necessary for us to, prepare for UPSC examination if our focus is on, getting different jobs in government? Like, is it necessary for us to attempt UPSC even if we are not aiming for it? People say that you should attempt UPSC at least for the sake of it. Is it No, no, necessary for no, them to attempt if definitely they're not. You will not gain anything out of it because it is not a thing which you can just pass it in a fluke. Many people think कि all right? भाई हम बैठ जाते हैं, हो सकता है प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, लेकिन एग्जाम इतना Yeah. ज्यादा डायनेमिक है और इतना ज्यादा इन-डेप्थ नॉलेज पे चेक करता है कि वो तो इम्पॉसिबल है। वो भूल जाइए, हो सकता है अगर 10-20 हजार लोग क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स में, तो हो सकता है एक आदमी का निकल जाता हो। तो मतलब वो Hmm. आपके लिए एक आदमी होना बहुत मुश्किल है, प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम है। तो वो तो सोचते ही Or नहीं है। बाकी देयर आर सो मेनी एग्जाम्स लाइक एसएससीज देयर, जहाँ पे hmm. बहुत सारे लोग जाते हैं। देयर आर सो मेनी पोस्ट, यहाँ पे सबसे कम पोस्ट है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स। Hmm. तो आपको अगर गवर्नमेंट Yeah. जॉब ही चाहिए है तो यू जस्ट फोकस, बिकॉज एवरी एग्जाम हैज इट्स ओन पैटर्न। आपको Yeah. पैटर्न डिसाइड करना है, उसके हिसाब से पढ़ना है। अगर आप आरबीआई के लिए एम कर रहे हो तो जरूरी नहीं एसएससी भी निकाल लोगे, या यूपीएससी के लिए एम कर रहे हो तो एसएससी निकाल लोगे, बिकॉज एसएससी टोटली डिफरेंट है, यूपीएससी टोटली डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें Hmm. बैठ के ये भी दे देते हैं। Bilkul, sir. Sir, when you got the result and you found the rank 627, what हम्म। was your feeling and what was your reaction when you heard about it? यार एक्चुअली इसमें क्या था कि जैसे जब मैं पहली, वो मेरा पहला मेंस एग्जाम था, एंड दैट टू Hmm. आई हैड prepared majority of the time while I was in job. So there were many Hmm. people who were thinking कि भाई ये अटेम्प्ट में तो किसी का निकलता ही नहीं है, तुम्हारा कैसे निकल जाएगा। तो जो इवन मेरे साथ जो जो काम करते थे वहां पे भी, जो बॉसेस वगैरह होते हैं, वो यूजुअली तो तुम्हें कोशिश करते हैं ना कि तुम रुक जाओ किसी तरीके से। तो एक ये Yes, बोल sir. देते हैं कि इतने लोगों ने तो दिया था, इनका तो हुआ नहीं, तुम क्या कर लोगे। तो वो होता है Hmm. कि जब रिजल्ट आता है तो उस टाइम ऐसा लगता है कि यार हमने इनको गलत ठहरा दिया, मतलब क्योंकि द थिंग इज, जब वो 3 महीने में पढ़ रहा था तो मैं इसी उससे पढ़ रहा था कि भाई एक तो अपना इनर मोटिवेशन है, और फिर ये है कि अगर नहीं हुआ तो मुझे क्या कहेगा, वो भी एक दिमाग में रहता है। मतलब आई Yeah. एम सेइंग इससे इम्पैक्ट नहीं होना, बट हाँ एक चीज रहती है दिमाग में कि इतने लोगों को तुम चैलेंज करके आए हो वहां पे कि मैं छुट्टी लेके जा रहा हूँ, मैं निकाल के आऊंगा, या ये है वो है। तो हाँ, जब आता है रिजल्ट तो यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ कि हाँ हमारे एफर्ट्स ने हमारे लिए काम किया है। Yeah. तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम, एंड सडनली यू बिकम अ पर्सनालिटी इन योर होम, इन योर एरिया, Yeah. Yeah. कि भाई इस बंदे का तो, इनके बेटे का सिविल सर्विसेज में हुआ है। तो वो अच्छी फीलिंग होती People है start ना, talking about it. बिकॉज योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को दूसरी तीसरी बार अपनी जिंदगी में ऐसा मौका देते हो, जब वो पहली बार भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, कि जब वो आपके बारे में प्राउड फील करें। तो दैट इज अ वेरी यूनिक फीलिंग। तो वो आई थिंक जब फील Yeah. करता है आदमी, तभी वो उस चीज को समझ सकता है कि वो कैसी फीलिंग होती है। Yes, sir. Sir, so I'm going to switch now, and I'm going to ask you questions related to the current situation of the country. I am sure that you must have read the news about how we are going a little down in terms of employing the youth of this nation. So Yeah. my question to you is, what do you think should be done to change this narrative? How can we bring more energy in our youth so that they can focus more on developing their skills and working on their communication so that they can get the jobs and get the economy lifting up? हम्म। देखो इसमें मेरे को लगता है कि इसमें देखो दो तीन चीजें हैं, कि एक तो है कि हमारे जो पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है, या हमारा जो सिलेबस है फॉर ऑल ओवर एजुकेशन सिस्टम। सो गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ब्रॉट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट दे हैव डन राइट नाउ। सो अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है, इवन एलन मस्क आल्सो थिंक्स दैट there is a time when everyone will start coding only, and if you are not having the coding skills, then you are outdated. And I feel that is true Yeah. also.
बिकॉज आने Yes. वाले टाइम में हर चीज मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर रही है एंड उससे भी आगे चीजें जा रही हैं अभी। तो हमें नहीं पता कि आने Yeah. वाले टाइम में कितने ज्यादा स्वीपिंग चेंजेस आने वाले हैं किसी भी चीज में। मतलब इकोनॉमी इज अ Mm-hmm. पार्ट ऑफ लाइफ, बट अगर वो चेंजेस आते हैं तो हमारी अभी तक की जो स्किल्स हैं, सपोज आपके कॉलेज से जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी ने ग्रेजुएशन करी, उसकी स्किल्स आउटडेट हो Yeah. जाएंगी। ही इज नॉट Yes. कंटिन्यूसली गेटिंग हिमसेल्फ। अब मेरी बात करो तो Yeah. अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि चलो सिविल सर्विसेज में चले गए, इनकी लाइफ तो सॉर्ट है, बट आई एम टेलिंग यू Yeah. जितना आपने एफर्ट सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के लिए किया है, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे काम करने के लिए एफर्ट की जरूरत है, एंड उससे ज्यादा आपको अपने आप को अपग्रेडेड रखने की जरूरत है। बिकॉज इफ यू आर नॉट अपग्रेडेड देन यू आर आउटडेटेड। और आने वाले टाइम में Absolutely. कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब है तो इट इज सेफ। मतलब द थिंग इज एवरीवन वांट्स टू प्रूव देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीवन वांट्स देयर ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क with the highest productivity. So if you are a deadwood, then obviously there will be no takers for you. तो आपको अपनी वैल्यू खुद Yeah. बनानी है, चाहे जो भी अपॉर्चुनिटी I, मिले अभी नहीं पता। अभी इकोनॉमी डाउन है लेकिन आने वाले टाइम में बूम करेगी, तो अपनी स्किल्स तो अपग्रेड होनी चाहिए जिससे जब अपॉर्चुनिटी मिले देन यू कैन गेन दैट अपॉर्चुनिटी। Agreed. So that's a very valid point, I must tell you. And I like to request the students as well, if they have any questions, please write it down. I am actually reading the comment section and I'll be taking up certain good questions, interesting ones if you have. I see one student repeating the question, sir, what is the backup plan if we don't clear? What is the backup plan? So that is the thing I told you in the very starting, that I did not went for the resignation and I wanted that this backup should always be there. तो बैकअप के लिए Yeah. आपका यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें यही चीजें टेस्ट करी जाती हैं, जनरल नॉलेज हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। तो अगर आप उस टाइम पे उस एग्जाम में भी अपेयर हो सकते हो, इफ यू आर नॉट टेकन एनी प्लेसमेंट फ्रॉम योर कॉलेज और इफ यू आर नॉट इन एनी जॉब, then you can also Yeah. appear for exams like banks are there, then some SSC jobs are there, many jobs are there which require the same kind of questions, which same kind Yeah. of skills you develop for UPSC। तो अगर आप वो करते हो तो that can be a backup option for you। And I All think right. students should not be obsessed with clearing the UPSC। एक हाँ जुनून होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, बट अगर नहीं हो रहा 2-3 साल में, 4 साल में, तो भाई अपनी जिंदगी भी तो आगे देखनी है ना हमें। यूपीएससी अच्छी चीज है बहुत अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, लेकिन खराब चीज है अगर आप 6 साल बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। तो हाँ, अपने आप को हम Yeah. टाइम पे सही डिसीजन भी लेना है कि अपने आप को जज करके कि नहीं हो पा रहा, बहुत सारे रीजंस होते हैं नहीं होने के। तो अगर नहीं हो पा रहा तो हमें उस चीज को रिकॉग्नाइज करना है एंड वी हैव टू मूव ऑन इन अवर लाइफ। Agreed, sir. Sir, a lot of students are also asking that what are the most important topics that you should prepare when you're preparing for UPSC? Important topics are already listed in the syllabus, so we have to stick to the syllabus and we have to cover the syllabus जिससे हमारी एक भी चीज में से ना छूटे, क्योंकि एक एक कीवर्ड सिलेबस का इंपॉर्टेंट है। हर कीवर्ड पे मेन 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, और अगर आपको वो Hmm. पता है यू कैन बी इन द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अगर आपको नहीं पता तो हो सकता है उससे बाहर भी हो जाओ। तो ऑलरेडी यूपीएससी हैज डन इट वेरी इजी फॉर अस, इजी यू कैन से इन द सेंस कि दे हैव लिस्टेड डाउन एवरीथिंग, एंड डिफिकल्ट Yeah. they have listed down single words, Yes. so it is Yeah. very broad। तो हमें उस चीज को पूरा सारे एस्पेक्ट से कवर करना है कि वो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके लिए हमें अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं कि किस टाइप से आते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ना है तो इकोनॉमिक सर्वे को कैसे हम लिंक कर सकते हैं, बजट को कैसे लिंक कर सकते हैं, पॉलिसीज को कैसे लिंक कर सकते हैं, या न्यूज़पेपर में जो आप इन्फॉर्मेशन उसमें कोई एग्जाम्पल मिलता है तो आप उसको कैसे लिंक कर सकते हो। तो बेसिकली व्हेन यू आर रीडिंग यू टू take in mind the syllabus, and you have to link the syllabus with the topics you are reading कि किस टॉपिक में एप्लीकेशन हो सकता है। Yeah. Sir, interview process is also, I think, a little complicated. A lot of people, do not get selected during the interview process as well. What are the tips and tricks that you'd like to give to the students as to clear the interview process? इंटरव्यू देखो क्या होता है कि ऑलरेडी आपने 9 पेपर्स यू हैव ऑलरेडी रिटन इन द मेंस। मतलब 2 ऑप्शनल के हो गए, 4 जीएस के हो गए, एक एसए का हो गया, एक इंग्लिश, एक हिंदी। Yeah. ठीक है, तो हिंदी लिख चुके हो, वहां पे आपकी नॉलेज ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। तो इंटरव्यू में Mm-hmm. वो आप देख रहे हैं कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, आप विकिपीडिया हैं कि नहीं है, वो ये चीज चेक नहीं Mm-hmm. करेंगे। दे आर चेकिंग योर पर्सनैलिटी कि अगर मान Yeah. लीजिए मैंने आपसे पूछा, आपको नहीं आता, तो हाउ Yeah. हाउ फास्ट यू आर, हाउ इन एक्सेप्टिंग दैट यू डोंट नो दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज यू Yeah. कैन नॉट नो एवरीथिंग अंडर द सन। सिविल सर्विस की तैयारी Yeah. करते हैं लोग, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, तो ऐसा नहीं होता।
और पर आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, तो लेकिन उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। देन दे टेस्ट योर माइंडसेट, आपका माइंडसेट कैसा है। दे कैन गिव यू अ Yeah. ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे सपोज मेरा अगर एनटीपीसी का जब एक्सपीरियंस था, तो वो आपको बोलेंगे कि भाई आपकी ऑलरेडी इतनी अच्छी पेइंग जॉब है, क्यों छोड़ना चाहते हो Hmm. उसको, यहाँ पे तो उससे कम मिलेगी सैलरी, बिकॉज सिविल सर्विसेज सैलरी इज लेस देन व्हाट आई वाज अर्निंग इन एनटीपीसी। Oh wow. Yeah. So the thing is, they can like try to put you in that situation. Test your तो आप उसका character. आंसर कैसे करते हो? मतलब बेसिकली व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ कमिंग टू सिविल सर्विसेज? दे वांट टू टेस्ट इट, बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें पावर मिलेगी, हमें प्रिविलेजेस मिलेंगे, इसके लिए आते हैं, सिर्फ इसके लिए आते हैं। Mhm. कुछ लोग आते हैं Yeah. कि हमें प्रेस्टीज मिलेगी, कुछ लोग आते हैं कि हमें काम करना है, कुछ लोग आते हैं एज अ करियर ऑप्शन चुन के कि सिविल सर्विसेज इज अ करियर ऑप्शन। तो दे जस्ट Yeah. वांट टू सी व्हाट इज योर माइंडसेट, व्हाट इज योर अप्रोच टू टैकल द थिंग्स, या कुछ ऐसा दे देंगे जहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, तो उसमें देख लेंगे कि Yeah. व्हाट इज द। All right. So, sir, after you achieved your goal, what was the next dream or goal that you've set for yourself so that you can push yourself forward? Because I see that you're not somebody who likes, the routine. Like you're somebody who does not enjoy the monotonous process. You want to see changes in your life every now and then. So, what was the change that you brought after becoming the officer? So the thing is like after coming to government sector, you are having so many things to do. मतलब Yeah. यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट में जहाँ पे भी हाथ डालोगे आप, आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे तो हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दो चीज, एक आप कर रहे हो जो आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाओ, दूसरा है इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में ला रहे हो आप, तो अपनी लाइफ में आप ला सकते Yeah. हो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके। और ऑफिस में जहाँ Mm-hmm. पे आप काम कर रहे हो, फर्स्टली आपको वहाँ के बारे में सोचना है, बिकॉज आप उसी के लिए आए हो। ऐसा नहीं कि हम Yeah. अपने पर्सनल पे ही सिर्फ फोकस करे जा रहे हैं। तो आपको दोनों चीजों का बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि अगर मैं पर्सनल स्किल्स अपग्रेड नहीं करूंगा देन आई विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द ऑफिस एज वेल। तो और ऑफिस Mm. में अगर नहीं कर रहा तो मेरी पर्सनल स्किल्स का कोई फायदा नहीं है। तो आपको बिल्कुल. दोनों जगह फोकस करना है और कोशिश करनी है कि जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे मान लो मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो इंडियन रेलवे मूव सो मेनी माइग्रेंट्स, तो आई ट्राइड माई Yeah. बेस्ट कि मेरी तरफ से जो भी काम आ रहा है दैट आई एम डूइंग ऑन द like same hour basis. If a request is coming to me on 2:30, I made it sure that from my side it is getting completed at 3:30, because everyone will take their Okay. time, और सबका Yeah. अपना टाइम अगर लगेगा तो फिर वही एक गवर्नमेंट मशीनरी जो स्लो हो जाती है वो इसलिए हो जाती है क्योंकि सो मेनी प्रोसेसेस आर लिंक्ड, सो मेनी पीपल आर लिंक्ड एंड एवरीवन इज Yeah. टेकिंग देयर टाइम। तो हम अपने यहाँ इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी तरफ से लेट ना हो कम से कम। तो दैट वाज Domino द effect. या एग्जैक्टली डोमिनो इफेक्ट। अगर मैं 1 घंटे में दे रहा हूँ तो सामने वाले पे भी एक मॉरल प्रेशर आएगा कि हाँ उस बंदे ने तो 1 घंटे में दे दिया, व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू दैट। तो आई थिंक दैट एक एग्जाम्पल की तरह काम करना पड़ता है हमें। और अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं मेरे साथ, तो अगर मैं कोई Yeah. चीज उनको बोल रहा हूँ करने के लिए, खुद नहीं कर रहा, तो हाउ कैन एक्सपेक्ट देम कि वो लोग करेंगे? तो यू हैव टू बिल्कुल. डू इट फर्स्ट बाय योरसेल्फ, देन यू कैन से हाँ तुम लोग भी करो। True, sir. बाकी Agreed. अपनी स्किल्स हमें कंटिन्यूअसली अपडेट करनी है, तो आई एम ऑल्सो डूइंग दैट। Absolutely, sir. Sir, the students are asking about unbiased newspaper. Is there any unbiased newspaper that can help them in giving unbiased news and current affairs and national updates? आई थिंक एक्चुअली देखो क्या होता है कि पॉलिसीज जो भी आती हैं वो बहुत सोच समझ के बनाई जाती हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होता है। तो जितने बिल्कुल सर. भी मतलब अगर हम बात करें द हिंदू की और इंडियन एक्सप्रेस की, तो द हिंदू को बोला जाता है कि इट इज स्लाइटली लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर। देयर इज अ जनरल Yeah. परसेप्शन ऑल द Yes. एस्पिरेंट दैट इट इज स्लाइटली लेफ्ट, बट आई एम सेइंग कि आपको अच्छी चीजें तो पता है पॉलिसी की, ऑलरेडी गवर्नमेंट पब्लिश्ड इट, गवर्नमेंट ने उसके Yeah. बेनिफिट्स भी आपको बताए। तो अगर कोई बंदा उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है तो आप हिंदू से पढ़ दो। मतलब मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आर वेरी गुड न्यूज पेपर्स फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, बिकॉज उन लोग की जो न्यूज होती है ओपेट्स होते हैं ज्यादातर अनबायस्ड रहते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन उसको तो तुम रोक नहीं सकते आज की तारीख में। तो वो हमें बिल्कुल सर. फिल्टर आउट करना है, बिकॉज हमें वो डिसाइड करना है कि सामने जो हमारे को न्यूज मिल रही है उसमें एक तरफ की बात करी गई है या दोनों तरफ की बात करी गई है। मतलब अगर वो बिल्कुल. बायस आपको दिख रहा है ऑन द फेस ऑफ इट, देन यू शुड इग्नोर दैट। और अगर आपको उसमें दोनों तरीके की यूज, और द थिंग इज यहाँ पे आने के बाद भी सिविल सर्विस में यू हैव टू टेक द स्टैंड्स व्हिच आर वेरी बैलेंस्ड। यू कैन नॉट गो इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर थिंग। Yes, sir. इट हैज टू बी वेरी Yes, sir. बैलेंस्ड। जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें काफी बैलेंस्ड ओपिनियंस आते हैं, तो वन कैन रेफर टू हिंदू न्यूज़पेपर।
Bilkul, sir. Sir, a lot of students also deal with depression, and there are tendencies. There are reports that a lot of people commit suicide as well because of Hmm. examination pressure. What is your message to them? What do you think should be done for the benefit of the students so that Hmm. they should not fall in this trap of depression? देखिए यार कि यूपीएससी के एग्जाम के बारे में क्या है कि दिस इज अ एग्जाम व्हिच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड पीपल डू गेट Yeah. बर्नट आउट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन लाइक एक साल दो Yes. साल तीन साल चार साल लगे हुए हैं और फिर दे रीच अ सैचुरेशन पॉइंट जब वो लोग Yes. या तो गिव अप कर देते हैं उसको या फिर अपने आप को हार्म करते हैं किसी तरीके से सोच के कि हम Yes. अभी तक सक्सेस हमें नहीं मिली तो सबसे पहले हमारे को दिमाग में क्लियर रखना चाहिए कि दिस इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम अपने को Yeah. पूरे एफर्ट्स देने हैं फुल एफर्ट्स देने हैं जो भी हमारे को लगता है कि हमें अपने मैक्सिमम एफर्ट्स देने हैं उसमें और उसके बाद हमें Mhm. रिजल्ट देना है क्योंकि रिजल्ट्स हमारे हाथ में मेरी जितनी कैपेबिलिटीज है Mhm. अपने एफर्ट्स लगा दिए वो सारे लगाने के बाद Mhm. अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो उससे मतलब डिप्रेस नहीं होने की जरूरत है क्योंकि लाइफ इज बिगर देन यूपीएससी लाइफ इज बिगर देन बिल्कुल एनी सर. कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप नहीं कर पा रहे हो 30 साल की उम्र तक आपने मान लो यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाला तो बाकी 30 कम से कम साल तो प्रोडक्टिव लाइफ के बचे हैं ना 30 से 60 तक के उसमें कुछ और कर सकते हो यार बिल्कुल. मतलब और बाकी ये बिल्कुल. है कि देखो ये बोलना तो बहुत आसान है जब लेकिन उस फ्रेम ऑफ Mhm. माइंड में लोग होते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है तो आई थिंक दे नीड टू Mhm. सराउंड देमसेल्फ विद पीपल हु कैन मोटिवेट देम जैसे एक स्टोरी थी रामायण Yeah. में अगर आपने सुनी हो कि जब हनुमान जी थे Yes, sir. हनुमान जी को श्राप दे दिया था ऋषियों ने कि ही विल फॉरगेट हिज Mhm. पावर्स क्योंकि वो बहुत परेशान Mhm. करते थे फिर जब संजीवनी बिल्कुल सर. बूटी लानी थी तो ही वॉज नॉट Mhm. रिमेम्बरिंग तो जामवंत थे जिन्होंने याद बिल्कुल. दिलाया था उन्हें कि तुम बहुत शक्तिशाली हो तुम बहुत पावरफुल हो तुम महावीर हो तुम जाओ और तुम कर Yes, सकते sir. हो ठीक है तो हमारे साथ बिल्कुल. भी ऐसे कुछ लोग होने चाहिए जो हमें हमारी पावर्स का ध्यान दिलाते रहे वो तुम्हारा फ्रेंड भी हो सकता है बिल्कुल. फैमिली भी हो सकती है तो बेसिकली यू हैव टू कंटिन्यूअसली शेयर दीज थिंग्स विद समवन हु कैन मोटिवेट यू Yeah. एंड गाइड यू मतलब कभी कभी हम शुरू कर देते हैं उसके बाद हम 2-3 साल मान लो 2 साल हो गए में फिर हमें लगेगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए इसमें तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ बिल्कुल. टाइम शुड से अरे तुम कर सकते हो भाई अभी तो शुरू किया है तुमने तुम्हारे अंदर बहुत बिल्कुल. तो उस टाइप के लोगों की होने की बहुत जरूरत है बाकी अपना मोटिवेटेड रहने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक मैं अपने कुछ मूवीज के गाने सुनता था मोटिवेट रहने के लिए या तुमने कुछ अपनी Mhm. वॉल्स मोटिवेटिंग पोस्टर्स लगा लिए तो फ्रॉम दैट यू कैन गेट द मोटिवेशन देयर आर सो मेनी थिंग्स Absolutely. फ्रॉम व्हिच यू कैन गेट द मोटिवेशन All but right, sir. डिप्रेस I होने का see कुछ the नहीं art. है more than UPSC at any point of time or more than any competitive exam Yes, sir. I see some art backgrounds in the backdrop, sir. Is it you who have drawn those नहीं pictures in it the is back? drawn by my wife I'm not All very good right. at art Okay. Oh, all right, sir. I think it was a wonderful conversation with you, and I'd like to thank you for this amazing opportunity as well for giving us so much in-depth analysis about how one should prepare for the examination, how one should prepare oneself for their life as well. But before I leave you, I would like to request you to kindly give a message to the student organization Ignite as well, who have helped us in conducting the entire event. Yeah. So, firstly, I would like to thank you for giving me the opportunity to come on live and sharing my thoughts with everyone. And I think अगर एक बंदे को भी benefit हो रहा है इससे तो my purpose is done and your purpose is also Yeah. done. कि सबको तो हम Yeah. नहीं कर सकते नहीं जोड़ सकते अगर एक बंदे को भी फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है बाकी इग्नाइट में आरिफ करके आपके जो है कोऑर्डिनेटर ही रीच Uh-huh. मी इंस्टाग्राम तो आई थॉट कि Yeah. भाई हाँ, मेरे को बताओ आई वाज इंटरेस्टेड बिकॉज आई आल्सो थॉट कि अगर जो चीज मैंने एक्वायर करी है ये मैं अपने साथ ले तो जा नहीं सकता कहीं पे बेटर टू शेयर दैट बिल्कुल. तो मेरे को लगा कि हाँ दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर आवर थॉट्स तो आई Yeah. कॉन्ग्रेचुलेट इग्नाइट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड आई होप दैट दे विल कंटिन्यू टू डू सो and there are so many civil Absolutely. servants who are ready to share their thoughts and they just need the platforms because we don't have usually time to share these things and firstly it takes a lot of effort to structure our thoughts क्योंकि टाइम जो है बताने के लिए वो बहुत कम है और जो बताने का है वो बहुत ज्यादा है दिमाग में तो हमें भी टाइम चाहिए बिल्कुल होता है सर. थोड़ा इन चीजों को स्ट्रक्चर करने के लिए तो आई कॉन्ग्रेचुलेट इग्नाइट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड प्लीज कंटिन्यू टू डू सो थैंक यू सो मच अगेन Absolutely, sir. Thank you so much, sir. And I'd like to thank all the students as well who have been wonderful. They've been pouring in good messages in the comment section. Thank you so much for that. And I hope to see you all again in some other session. And I hope that, the process that we have taken up to learn and to grow
is going to continue forever, and we're going to continue learning good things, and we're going to continue learning good insights from people as well who are as great as Mr. Nav Goyal, who has given us his wonderful experience about his life journey. Thank you so much, sir, and Thank you goodbye, so much. everybody. Have a Okay, bye. bye, sir.